हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी में ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे जो सेट सबसेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। सेट और सबसेट के कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चंस को देखते हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है। इफ ए इज अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, तो एक सेट ए है, उसमें एन एलिमेंट्स है, ठीक है। और सबसेट पी, एक सबसेट पी हमने of A is chosen at random। सेट A में n एलिमेंट्स है और उसका एक सबसेट P हमने चोजन किया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि अगर सेट A में n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, दैट इज 2 की पावर n। सो देयरफॉर आई कैन चूज the subset P of the set A in 2 की power n ways. These are the ways I can choose the subset P. That is, selecting the subset P of the set A has 2 की power n ways. Okay, first thing is clear. Now the set A is reconstructed. Set A is reconstructed by replacing elements of A. अब हमने क्या किया है, सेट ए को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। मतलब जो पहले था, दूसरे में था, तीसरे में था, वो बदल गए। वापस से सेट ए है, वापस देयर आर टोटल एन एलिमेंट्स स्टिल देयर इन द सेट ए। नाउ अगेन अ सबसेट क्यू इज अगेन chosen at random. Again a subset Q is chosen at random from the set A containing n elements. That means Q can be chosen in 2 की power n ways. Earlier P can be chosen in 2 की power n ways. Again Q can be chosen in 2 की power n ways. So the total ways of selecting the subset P earlier and the subset Q after that will be 2 की power n into 2 की power n. That's very simple. तो total ways आ गए. Total ways is 2 की power n. That is the number of ways of selecting the subset P into 2 की power n, that is the number of ways of selecting subset Q, that is 4 की power n is the total number of ways of selecting subset P and subset Q. Is that clear? Okay, fine. Now come to the find the probability that P and Q have no common elements. अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया कि P and Q have no common elements. अब इसको कैसे थिंक आउट करना है, सी लेट सेट ए कंटेनिंग द एलिमेंट्स A1, A2, A3 like that AN. These are the n elements present in the set A. Fine. After that we are having the set P, subset P and subset Q. Okay, subset P and subset Q. Suppose I want to see the A1 element, whether A1 is there in P or in Q. So what are the possibilities? The possibilities are A1 is present in P, it is also present in Q, it is present in P but not in Q, not present in P but present in Q. Similarly, it is not present in P as well as in Q. So these are the 4 possibilities for each of the elements A1, A2, A3, AN which are there in set A, that can have these type of possibilities with respect to the subset P and Q. Got the point? A1 either present in both the subset P and Q, or it may present in P only, not in Q, only in Q, not in P, or it is not present in both of P and Q. Is that clear? Okay, now come to this question. Find the probability that P and Q have no common elements. Common elements नहीं होना चाहिए. So these 3 are my favorable cases. These 3 are my favorable cases. So therefore I can say that A1 has 3 possibilities,
A2 has 3 possibilities, A3 has 3 possibilities for this particular question. So therefore, favorable cases is 3 into 3 into 3 up to the n times. That is 3 की power n, and hence your probability. Probability is 4 की power n, okay, और यहाँ पे आएगा फेवरेबल में 3 की पावर n, और यू कैन से दैट 3 की पावर 3/4 की पावर n. ये इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 4 की पावर n. करेक्ट. आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 और इसकी पावर n. तो इसके ऊपर एक पीवाई क्यूज देखते हैं जेई मेंस का, और ये जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर. व्हाट द क्वेश्चन सेज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट टू रैंडमली सिलेक्टेड सबसेट okay, two subsets we are selecting randomly. So the first set can be selected in 2 की पावर n में से. यहाँ पे n कितने हैं, फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 and 5. तो टोटल वेज आ जाएंगे. टोटल वेज ऑफ फर्स्ट सेट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 की पावर 5 वेज इनटू, and second set can be also selected in the 2 की पावर 5 ways. Correct है. So this is the total ways. Fine. Now the question says that the probability that two randomly selected subset of the set have exactly two elements common in their intersection. So जैसा मैंने डिस्कस किया है कि if suppose that I am having the subset P and subset Q, so element is either present in P or in Q, either present in P but not in Q, okay, not in P but present in Q, not present in both P and Q. These are the 4 possibilities. Now here the question says that P and Q has exactly 2 elements. So 2 elements are present in both P and Q. So the first question is, what are those 2 elements? कौन से 2 elements है, 1 है 2 है, या 2 है या 3 है, या 3 या 4 है, या 4 और 5 है. So first of all फेवरेबल केस में first of all select those 2 elements which are present exactly in P as well as in Q. Correct? Okay, fine. So these are present in P and Q. Now what about the remaining 3 elements? So 3 elements will follow these cases. Okay, the remaining 3 elements will have the 3 ways to go P and Q. So that is, first element has 3 ways, second element has 3 ways, third element has 3 ways. So these are the possibilities for each of the remaining element. That is, if suppose that 1 and 2 both are present in P and Q, then 3 has 3 choices. This one, this one, this one, this one. Similarly 4 can have these choices. Similarly 5 can have this type of choices. So the favorable cases are here. 5C2 means 10. 10 into, you can write 5 into 2 only, 10 go. 5 into 2 and 3 की power 3 means 27. So required probability यहाँ लिख देते हैं. The probability is 5 into 2 into 27 2 की power 5 into 2 की power 5. तो 2 की पावर 9 तो आ गया है ना. एक यहाँ से 2 कैंसिल आउट होगा, 35 के 5 135 बाई 2 की पावर 9, ये आपका आंसर होगा. 135 बाई 2 की पावर 9. So how simply we can solve such type of problems if we know this kind of possibilities for every element present in the set A that can have this type of possibilities to go in the subset P and the subset Q. Okay.